सब गाइस। तो आज की वीडियो में गाइस बात कर लेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, विच इज़ एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सो एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो हर किसी को आने चाहिए, बेसिकली नॉट स्पेसिफिकली इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। हर किसी को आने चाहिए, मार्केटिंग, ऑपरेशंस एक्सेट्रा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेल फंक्शंस हैं जो मैं आज की वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो बेसिक फंक्शंस लाइक बॉर्डर्स, कलर्स, बोल्ड, इटैलिसाइज कैसे करते हैं, रो और कॉलम की हाइट कैसे एडजस्ट करते हैं, वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप। This is the most important one basically. Then filter, adding, removing, sum if, count if, average, etc. Index, let, unique, format cells, find and replace, delimiter. So everything will be covering in this video. This is part one basically. So uh, दो या तीन पार्ट में I will cover the basic or important parts of the Excel which is widely used in the industry basically. So अगर आप स्पेसिफिकली फाइनेंस में करियर बना रहे हो, आप लेट्स से यू आर इनटू वैल्यूएशन एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग, सो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्सेल सीखना। क्योंकि इस इंडस्ट्री में बेसिकली यू हैव टू मेक फाइनेंशियल मॉडल्स, एनालाइज देम एंड यूज लॉट ऑफ शॉर्टकट कीज इन ऑर्डर टू make your work smooth and less time consuming. So that is why. So without wasting any time, so let's deep dive into it. मैंने ये एक फाइल बनाई हुई है। ये थोड़ा देख के डरना मत गाइस ये थोड़ी फाइनेंशियल मॉडलिंग मैं कर रहा था टाटा मोटर्स की, बट इससे हम थोड़ा सीख लेंगे एंड मैंने थोड़ा इजी करने के लिए भी ये बनाई हुई है फाइल एक। लेट मी जस्ट शो यू दिस वन। ओके, सो ये मैंने कंपनी ली हुई है, लेट्स से ABCDEFGHIJKL, एंड दिस इज द, यू कैन से स्टॉक प्राइस समझ लो आप, या प्राइस कुछ भी ले लो, ठीक है, फॉर योर ईज। सो विल डू दिस फर्स्ट। ओके, सो मैं सब कुछ एकदम नॉर्मल कर देता हूँ पहले, ठीक है। सो आई हैव रिमूव्ड एवरीथिंग। गाइस, एक्सेल में जब भी आप यूज करो तो ट्राई टू यूज ओनली कीबोर्ड, डोंट यूज माउस और द सेंसर विच इज देयर इन योर लैपटॉप। सो जितना जल्दी कीबोर्ड से सीख जाओगे उतना फास्ट आप काम कर सकते हो एक्सेल में। सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली फर्स्ट मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, बेसिक फंक्शंस लाइक बॉर्डर कैसे ऐड करते हैं, कलर्स कैसे ऐड करते हैं, रो कॉलम की हाइट कैसे एडजस्ट करते हैं। सो विल डू दिस फर्स्ट। ओके, सो मैंने एक कंपनी और प्राइस लिखा हुआ है। ओके, सो आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा शिफ्ट एंड कंट्रोल। So shift and control, I'm using only keyboard just to let you know guys. Okay, so shift, control, and then right arrow and then down arrow. So you have to select like this. Okay, and then press for like the shortcut is to add borders. So basically the shortcut is for adding borders is Alt HBA. ओके, सो एंड मैं ऑल्सो इन सारे शॉर्टकट्स की एक PDF आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दिस, वहाँ से आप गो थ्रू कर लेना। एंड ऑल्सो मैं आपको एक डेटा सेट भी प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसमें मल्टीपल डेटा सेट्स होंगे अलग अलग डोमेन के, लाइक मार्केटिंग का अलग डेटा होगा, फाइनेंस का अलग होगा। सो वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद यू कैन डू दैट एज वेल। ओके, सो ये एक चीज़ है। सो बॉर्डर हमने ऐड कर लिए हैं, अब हमें जैसे कलर ऐड करना है तो देन अगेन शिफ्ट राइट एरो देन ऑल्ट एच एच ट्वाइस। ओके, दो बार एच प्रेस करना है, देन यू हैव टू सिलेक्ट द कलर लाइक येलो। अगेन वी हैव टू डू दिस एंड फिर आपको थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। ओके, देन ऑल्ट एच वी ए ऑल्ट एच एच एंड दिस। ओके, सॉरी मैंने सारा सिलेक्ट कर दिया, ये ऑल्ट एच एच दिस। ओके, सो कलर का जो वो कलर ओपन करने का जो शॉर्टकट है वो ऑल्ट एच एच दो बार। ओके, एंड बॉर्डर का है ऑल्ट एच बी ए। ओके, देन नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज बेसिकली वी हैव टू adjust the column width. Select then HBO. ओके, ऑलरेडी एडजस्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने इसको ये कर दिया। नाउ वी हैव टू एडजस्ट, सो बेसिकली सिलेक्ट फर्स्ट, सिलेक्ट द होल एरे, देन ऑल्ट एच ओ आई। ओके, सो दिस विल ऑटोमेटिकली गेट एडजस्टेड। अगर आपको और अपने तरीके से करना है तो ऑल्ट एच ओ, देन यू हैव टू प्रेस W एंड यू हैव टू ऐड सम नंबर लाइक 20, सो दिस विल गेट लाइक दिस। ओके, सो अगर देखो कोई भी फंक्शन है ना, आपको
कोई भी फंक्शन लगाना है तो वो समझ में नहीं आ रहा कैसे लगाऊं, तो पहले ऑल्ट प्रेस करो, ऑल्ट के बाद एच प्रेस करो, फिर वो आपको बताएगा कि कहाँ पे कौन सा फंक्शन है एंड वेयर टू ऐड विच अल्फाबेट। ओके एंड जैसे मेरे को क्या करना है, अब फॉन्ट साइज बढ़ाना है। ओके सो यहाँ पे लिखा आ रहा है एफ एस, सो मैंने एफ एस दबाया तो मेरे पास ऑप्शन आ गया, नाउ आई हैव टू, आई कैन इजीली एडजस्ट द फॉन्ट साइज, लाइक 15 कर दिया। ओके सो दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क। ओके सो इसमें ये हो गया। नाउ अब मुझे सम करना है जैसे इन नंबर्स का। सो एक सम करने के लिए दो फॉर्मूला आते हैं, इज इक्वल्स टू सम एंड देन सिलेक्ट ऑल। ये तो हो गया ट्रेडिशनल तरीका। यू हैव टू बी फास्ट एंड क्विक। ओके सो आपको दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, वो होता है ऑल्ट इक्वल टू, दैट्स हाउ डन। ओके ऑल्ट इक्वल टू, यू विल गेट द सम, and if you want to align it center, then you have to press alt h ac, done. And if you want to bold it, like control b italic control I, and if you want to, sorry, underline this, then control u. That's how it done. Okay and ठीक है, तो सम हो गया। सम, if we want to do the average, average के लिए is equals to average, select all, you will get the average. You want maximum, sorry, is equals to max, sorry, max, you get the maximum. Okay same, minimum, ज़्यादा फास्ट हूँ गाइस मैं थोड़ा, और इतना भी फास्ट नहीं होना। ऑल्ट लाइक सेंटर लाइन करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, ट्रेडिशनल यहाँ से कर सकते हो, ठीक है, बट मैंने जैसा बोला यू हैव टू बी फास्ट एंड क्विक, सो आपको ये चीज़ एकदम मुंह पे रटी होनी चाहिए, लाइक ऑल्ट एच ए सी, डन। बोल्ड करने के लिए कंट्रोल ए बी, एच बी, ओके एंड इसको थोड़ा बीच में स्पेस कर लेते हैं। ओके देन इफ वी वांट टू डू लाइक और क्या कर सकते हो, मीडियन लो, मीडियन ले लो। ओके शिफ्ट कंट्रोल एंड अप एरो, you get the median. Okay so ऐसे ही क्विकली आपको करनी है चीज़ें। ओके सो फर्स्ट वन इज डन, मैंने आपको बता दिया रो एडजस्टर टाइल्स कैसे करते हैं, बोल्ड कैसे करते हैं, बॉर्डर्स वगैरह सब कुछ। अब आ जाते हैं वी लुकअप एच लुकअप पे, ठीक है। उसके लिए मेरे को थोड़ा इधर जाना पड़ेगा, ठीक है, डेटा शीट में आता है, यहाँ से आसान होगा, ठीक है। अब जैसे मेरे पास सेल्स दी हुई है, ठीक है, फोकस ऑन द सेल्स पार्ट। ओके वी लुकअप, सो मैंने लगाया वी लुकअप। ओके मेरे को चाहिए ये वैल्यू। ओके table array, I have to select from this, okay, and column number 1 में है वो value and I want the exact match, so that's how I get the value from VLOOKUP. okay so ये formula है VLOOKUP का। so इससे आप like ये तो छोटा डेटा है but there are lakhs of entries, you know, while you are into the financial modeling and this thing. So जब large number of data set होता है तो you have to like you will be facing difficulties in identifying the values. So VLOOKUP आपको help करता है वहाँ पे। Similar केस में अगर मैं इसको डिलीट करके यूज करता हूँ HLOOKUP, I want this value, let's say, okay, and table array is this, okay, and the row number is 1, 0.
दैट्स हाउ आई गेट द वैल्यू. ठीक है. सो ये एक बहुत अच्छा फंक्शन है एक्सेल का, बहुत इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज ये बहुत वाइडली यूज होता है इंडस्ट्री में. अब आ जाते हैं एक्स लुकअप पे. ये एक बहुत ही अच्छा फंक्शन मुझे लगा, बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड है और बहुत कन्वीनियंट भी है. ठीक है. लेट्स से मुझे एक्स लुकअप लगाना है एंड आई वांट लाइक दिस इज द डेटा विच आई हैव गिवन, and I have given a task. Okay, I've given a task like I want the price of these companies, not in the alphabetical order. I want randomly. Like I want company A price, company G price, and you don't have to like uh, use like is equals to you are doing this and this. No, वहाँ पे एंट्रीज बहुत ज़्यादा होंगे, so आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. वो कैसे करोगे? देन एक्स लुकअप काम आएगा. Is equals to x lookup. I want company A value, comma, lookup array is this, from this array and return array is this. इसका मतलब है कि मुझे एक कंपनी का प्राइस चाहिए, इस एरे में से कंपनी ए का चाहिए, एंड क्या चाहिए कंपनी का, मुझे प्राइस चाहिए. ओके, स्टॉक प्राइस और मे बी व्हाटएवर प्राइस दिस इज. ओके, देन if not found, please return 0, and if match, like give me the exact match, and then done. ओके. अब यहाँ पे मैंने ये कर तो दिया है. लेट्स से अगर मैं इसको ड्रैग डाउन करूँगा. ओके, ड्रैग डाउन भी आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो, एंड देयर इज अनदर वे लाइक कंट्रोल सी एंड देन शिफ्ट स्क्रॉल डाउन एंड देन कंट्रोल वी, यू विल गेट दिस. ओके. सो एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर है. आपको क्या करना है, इसको हमेशा आपको फिक्स कर देना है, मतलब फ्रीज कर देना है बेसिकली. एंड फ्रीज कैसे होगा? ऑल्ट F4, आई मीन फंक्शन F4. पीसी में डायरेक्ट F4 हो जाएगा, लैपटॉप में Fn दबा के Fn होल्ड करके रखना पड़ेगा, देन Fn प्लस F4. ओके, देन यू विल गेट दिस. जस्ट कंट्रोल सी. ओके, वैल्यूज चेंज कैसे हुई, एक सेकंड. डन. अब ओके, दोनों को आपको लुकअप एरे एंड रिटर्न एरे दोनों को फ्रीज कर देना है आपको. ओके, दैट्स वाई वो अलग अलग नहीं होंगी फिर वैल्यूज, वरना कभी कभी अलग अलग हो जाती है. अब लेट्स से जी की वैल्यू है 500. आई वांट जी की जगह मुझे चाहिए, किसकी नहीं है मेरे पास, आई की नहीं है, सो आई वांट आई की वैल्यू. सिंपल, सॉर्टेड. सो ये एक बहुत अच्छा फंक्शन है एक्स लुकअप. ओके, अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है हमारा. सॉरी, यस, फिल्टर एडिंग एंड रिमूविंग. ओके, सो लेट्स से मुझे इस डेटा सेट में फिल्टर लगाना है. लेट्स से ये थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज है एंड आई वांट एक सम पर्टिकुलर कंपनी. सो सिंपली मैं क्या करूँगा, शिफ्ट एंड राइट एरो सिलेक्ट, देन आई विल जस्ट प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एल, ऑटोमेटिकली फिल्टर लग जाएगा. यहाँ से भी आप लगा सकते हो FILT लिख के फिल्टर, यू विल जस्ट यू हैव टू प्रेस दिस फिल्टर एंड ऑटोमेटिकली फिल्टर गेट्स एडेड. ओके, बट वही चीज, क्विक, you have to be fast and quick. So just you have to just press Control Shift L and you can make it alphabetically smallest to largest and largest to smallest, ascending order, descending order. Okay, so if I want specifically, like I just want company G value, I'll get the G value. Okay, if I want D value, I'll get G and D both. I'll get D and G both. And also I can use the like filters. There are the filters as well. Like if I want specifically like my company's value should be greater than, company is greater than, sorry, okay, I want only those companies whose price is greater than 100. Let's see. So I'll just go to the price number filters, greater than 100. So I've gotten the companies whose stock price are more than 100.
लेस देन 100 वाली उसने रिमूव कर दी ऑटोमेटिकली बाय यूजिंग द फिल्टर ऑप्शन. सो ये एक बहुत अच्छा टूल है आपके लिए. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ये. बेसिकली चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं. ओके, नेक्स्ट अप वी हैव सम इफ, काउंट इफ. ओके, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं. काउंट इफ आपका ऐसे यूज होगा. बेसिकली you have to select the range. Okay, I want all the prices and I only count those companies whose stock price are greater than 1000. डबल डबल कोट करके देंगे, ठीक है. मतलब इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखना है आपको. सो 6 कंपनीज आर देयर. ओके, इसने मेरे को बता दिया. चेक कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6. सही है बिल्कुल. ओके, सो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं इफ़ यू थिंक कि सही नहीं हो सकता मे बी. सो यू कैन ऑल्सो वेरीफाई, बट लैक्स ऑफ एंट्रीज में वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं होगा. सो यू हैव टू बिलीव इन एक्सेल. ओके, सो काउंट इफ हो गया यूज. देन I will use sum if. Sum if may I select the range. Criteria, my criteria will be like the value should be greater than 500. Okay, done. So this is my range. जो भी 500 से ऊपर के स्टॉक है उन सबका इसने सम करके दे दिया मेरे को. Okay, like say this, you can check 24779, 24779. Done. Okay, next up we have ओके, इंडेक्स लेट यूनिफॉर्म से मैं आपको थोड़ा बाद में बताता हूँ ये वाला. पहले मैं ये बताया था आपको फाइंड एंड रिप्लेस आप कैसे कर सकते हो. लेट्स से आई वांट टू फाइंड अ नंबर लाइक control F. Using control F, I just have to, I want to replace this number 452. Okay, so 452 I have written. Okay, and replace it with 500. So okay, 452, sorry, first you have to select it, then use control F, then use replace 450 to 500, then click replace. Oh yes, got it. You have to click on replace all. Okay, so the automatically the total gets changed. Okay, so ऐसे ही जैसे if you want कि आपको किसी कंपनी का वो चेंज करना है नाम, so just go to control F, find, let's say I want to change the company name A to Google. Okay, just have to click replace. Okay, उसने ए वाला भी चेंज कर दिया. तो इसको ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा. लेट्स सी, जस्ट रिप्लेस ओनली द ए. ओके, सो आई गेस ए को फाइंड आउट करने में इसको प्रॉब्लम आ रही है. ए बेसिकली मल्टीपल एज है तो मे बी इसको इसलिए इशू आ रहा है. बट यस, इफ यू डू लाइक दिस ए, सो इट विल बी चेंज्ड ऑटोमेटिकली. ओके, सो स्पेसिफिकली आपको अगर उसको ही चेंज करना है, सो जस्ट क्लिक ऑन दिस, कंट्रोल एफ, replace it with Google. Okay, sorry, I have by mistake clicked on replace all. Just select A, control F, replace Google. Yes, that's it. Okay, just आपको उस पर क्लिक करके आपको सिलेक्ट करके उस पर होवर करके you have to replace it with Google, like, or whatever name you want to give. That's how it works. Okay, so एक ही हो गया find and replace का. उसका शॉर्टकट था control F. Okay, and if you press control H, it will open the replace window. Okay, then comes to format cells. Okay, अब let's say मुझे इन वैल्यूज में कॉमा लगाना है. ओके, एंड एक एक करके लगाऊंगा तो ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग होगा बहुत ज़्यादा. सो आई विल जस्ट प्रेस control 1. control 1, go to custom and go to this formatting. like 50 है तो इस पे कोई कॉमा नहीं लगेगा, बट बाकी पे लग जाएगा. so like this. okay, and if you don't want decimals, then again control 1, go to custom
and then just simply remove these decimals, sorry, and the full stop as well. Okay, so that's how it works. Okay, this is the format, and not only this, you can do a lot of things like control one. You can also change the numbers separator. You can add separator. You can change the currency, you can change the accounting term, you can change the day, date, and everything, protection, fill, border. You can do everything whatever you want. Just have to press control one. Okay, no need to search on this search bar. कोई जरूरत नहीं है उतना deep जाने की. That's how you work on Excel. Okay, just you have to press control one and you will get a lot of features. Okay, and let's say अपन सा है, yes, delimiter. Let's say मैंने एक value लिख दी A B C D E F, ठीक है, and I want to separate it. So ट्रेडिशनल वे में लोग क्या करेंगे, A B C D E F हो गया, बट टाइम कंज्यूमिंग है ऑब्वियसली. अगर मैं बोल दूं कि ये हंड्रेड्स ऑफ लेटर्स है, फिर कैसे करोगे? सो इसका एक शॉर्टकट है ऑल्ट ए प्लस ई. ओके, यू विल गेट द delimiter option. Okay, just click on fixed width. Okay, and then go next again, and you have to click on comma, sorry, you have to click on fixed width. Okay, fixed width, then you can easily separate it like this. Okay, just have to add some arrows, or like to create a break line. Okay, here the instructions are written, like to create a break line, click at the desired position. To delete a break line, double click on the line. To move a break line, click and drag it. Okay, just press next and finish. That's how you got your result. Okay, so ये था, बहुत easy तरीका है guys, ये बहुत easy तरीका है. Okay, you can use the delimiter function like this. Okay, और कहता है yes, now comes to this index let and unique function. ये बहुत अच्छा function है to be honest guys. Unique in the sense, basically if I use the unique function, so like let's say मेरे पास कंपनी A की दो वैल्यूज हैं. ओके, and I want only the unique companies, not the same ones. I want the distinct companies. Unique, I'll just select the array. Okay, by column, return unique columns. Okay, so इसने मेरे को यूनिक कॉलम्स दे दिए, मतलब जो सेम भी थे अलग भी थे वो भी दे दिए. नाउ इफ आई चेंज द, like if I ask unique rows, okay, see the difference. I asked return unique rows only. Okay, not the same, unique rows. So it will give me this. Okay, randomly. Okay, if I return unique columns, okay, return items that appear exactly once. हाँ, ये हमसे मिस हो रहा था basically. So I want return every distinct item. Okay, so yes, that's how it gives. Okay, इसने A का मेरे को दिया है पर वैल्यू नहीं दी, टाइम दे दिया basically. So there may be some error. Okay, क्योंकि 85 दो में सेम हो गया, तो that's why उसने वहाँ पे टाइम लिख दिया. आप उसको चेंज करके नंबर भी कर सकते हो. Just press Ctrl 1 and just general it. Okay, so वो आपको सेम नंबर भी दे देगा. But if I want this true, एक ही बार आए. Okay, so this is the major difference that it gives. Like if I make it 66 unique. Okay.
हर एक डिफरेंट आइटम दे देगा, एंड देन इफ आई मेक इट ट्रू, ओके, return unique rows, okay, then every distinct item, that's how it gives, okay. So ये फंक्शन थोड़ा अलग वे में यूज होता है, मेरे पास उस तरह के डेटा नहीं है, so that's why I'm unable to provide you that result. Okay, okay. लेट्स से अब कौन सा फंक्शन यूज करना है हमें, यूनिक का मैं एक बार आपको डेटा निकाल के बताता हूँ एक बार दोबारा से. इंडेक्स फंक्शंस, ओके, इजिकल्स टू इंडेक्स. इंडेक्स का मतलब क्या है? रिटर्न्स अ वैल्यू रेफरेंस ऑफ द सेल एट द इंटरसेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर रो एंड कॉलम इन अ गिवन रेंज. ओके, सो इंडेक्स फंक्शन बेसिकली मैच फंक्शन होता है. इन केस अगर आपकी वैल्यूज मैच कर रही है पर्टिकुलर, लाइक इफ आई वांट स्पेसिफिकली रो नंबर 2 and column number 2 value, so it will give me like this. Okay, like say I have selected the array, I want row number 5, okay, and column I have two column 1 and 2. Okay, let's press 2. I want row number 5, fifth row and second column value, like fifth row 1 2 3 4 5 D 85. It should give me 85. 85. And if I want 8th रो, क्योंकि इसमें मैंने लेबल्स को भी काउंट किया, दैट्स व्हाई वो लेबल की वैल्यू भी काउंट कर रहा है उसमें. 8th रो एंड सेकंड फर्स्ट कॉलम वैल्यू, लेट्स चेंज इट टू फर्स्ट. L. Let's check A. 1 2 3 4 5 6 7 8 L. You can see. Okay, this is the beauty of index function. Okay, let function we should. ओके, सो लेट फंक्शन इज बेसिकली, ये इसमें क्या होता है, मैं कोई भी एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकता हूँ. लेट्स से x को मैंने असाइन कर दी 5, ओके, देन y को मैंने असाइन कर दी 10, सॉरी 10, एक z को मैंने असाइन कर दी लेट्स से 6, ओके, ओके, एंड नाउ आई वांट दैट सम ऑफ x plus y divided by z, what should be the value? Let's see, sum of x plus y, okay, divided by z, what should be the value? 2.5. Like sum of x plus y, 10 plus 5 15 divided by 6, so it should be 2.5. Yes, it's 2.5. okay, so this is the beauty of let function. let's say हम थोड़ा change करते हैं इसको, x की वैल्यू मैंने कर दी 6 and y की कर दी 4 and इसकी कर दी 2.5, 4. okay, that's how let function works. गाइस, यूनिक फंक्शन का जो हमारे को थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था वो ये था, बेसिकली यूनिक फंक्शन में आपको एरे सिलेक्ट करनी है, ओके, and return unique rows if you want, or unique columns. I want unique columns, okay, done, and return items that appear exactly once. Okay, uh, okay, let's see how it goes. okay, yes, हाँ, सो इसने मुझे ये बता दिया है बोल्ड करके ऑटोमेटिकली कि ये ए और सी की जो वैल्यूज हैं, ए की स्पेसिफिकली जो वैल्यू है वो रिपीट हो, मतलब ए कंपनी है रिपीट हो रही है 2 बार. ओके, सो ये आइडेंटिफाई कर देता है कि जो वैल्यू एक से ज्यादा बार रिपीट हो रही है, ठीक है. सो दैट्स हाउ आई विल जस्ट रिमूव इट एंड मेक इट यूनिक. ओके, सो यहाँ से रिमूव नहीं होंगी, मेरे को यहाँ से रिमूव करनी पड़ेंगी ये, लाइक दिस. ओके, एंड ये थोड़ा बड़ा डेटा में ज्यादा अच्छे से हो पाता है. इफ आई वांट, सॉरी, ओके, एंड आई विल जस्ट मेक इट ट्रू. सो इट विल गिव मी एवरी डिफरेंट आइटम. तो ये थोड़ा अलग वे में यूज होता है, लाइक जब डेटा सेट बड़ा होता जाता है, ठीक है. तो यहाँ पे ज्यादा वैल्यूज होनी है नहीं यूनिक, ए 2 बार ए यूनिक है बस, दैट्स ऑल. इसने इसको बोल्ड कर दिया है, पता नहीं सी को इसने बोल्ड क्यों किया है, मे बी सम ग्लिच विल बी देयर.
ओके, बाकी मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको सब कुछ, शॉर्टकट वगैरह कैसे यूज होते हैं, ठीक है। लेट्स कम टू, ओके, ऑलमोस्ट मैंने सारे कवर कर दिए हैं। मैं जस्ट थोड़ा बेसिक एक आपको बता देता हूँ, शीट वगैरह ऐड रिमूवल का शॉर्टकट्स। ओके, इन केस यू वांट टू यू नो create a new worksheet, just press Control N, new worksheet will pop up. Okay, and in case you want like you want to add another sheet to it, like just press Shift plus F11, Shift plus Fn, Shift F11. Okay, so मैं लैपटॉप पे हूँ तो बेसिकली अगर आप पीसी पे हो तो शिफ्ट प्लस F11, एंड लैपटॉप पे कर रहे हो तो Fn प्लस शिफ्ट प्लस F11. Okay, and if I want to remove this, you just have to press Alt EL. Okay, again Fn, Shift F11, new sheet has been added. And if I want to remove this sheet number 7, just press Alt EL. That's how it works. Okay, and if you want to delete this sheet, this particular, just press Alt EL. This will show you that Microsoft Excel will permanently delete this sheet. Do you want to continue? If you press delete, it will get deleted. Just press cancel. Okay, I don't want to delete the sheet. सो गाइज ये था पार्ट 1 एक्सेल का। सो बेसिकली मैंने इसमें चीज़ें कवर करी हैं, थोड़ी सी शॉर्टकट्स वगैरह। अभी थोड़ा ये बेसिक पार्ट ही है, सो अगले और पार्ट में मैं थोड़ी और एक्स्ट्रा चीज़ें कवर करूँगा, लाइक लोन अमोर्टाइजेशन एक्सेट्रा, पीएमटी, इंटरेस्ट रेट, वो सब थोड़ा कवर करूँगा। सो दैट विल बी ईजियर फॉर यू, ठीक है। इन केस लाइक आप इंश्योरेंस सेक्टर में वर्क करें तो आपको वो सब फंक्शन आने चाहिए, और इन जनरल भी आने चाहिए। ओके, so that's how the Excel thing works, and that's all for this video. I'll meet you in the next video. Till then, bye bye, take care.